10th. Now this is our 8th video lecture, and this is our last video lecture for this particular chapter, electricity. Now only the very few topics are remaining, hardly 2 topics are remaining in this chapter, then this chapter is maybe finished today. So now after this chapter we will be start the numericals. So in this last video lecture number 8, we are going to discuss our very beautiful topic, electric power. Okay, so look at here, our next topic is in this chapter is electric power. In a very small definition, we can already define the rate of doing work. The rate of doing work is known as power. Okay, it's a very simple definition. The rate of doing work known as power or electric power. Okay, so we know that how much work done required on a charge when particular electric potential V is already placed in a particular electric circuit. So we know that here, because the electric potential is work done upon charge, so therefore we can write the particular work done over the charge will be there VQ. Okay, and as per the definition, the rate of doing work is a power. So we can define power will be equals to, look at here please, work upon time. Now here work is, you can see here, work is VQ, so we place the value VQ upon T. Okay, now we already know that by the definition of I means electric current, we know that I equals to Q by T. Okay, so here power P will be equals to V, and in place of Q by T here and here we can write P equals to VI. This is a particular electric power, and this particular thing we can also convert in the form of V and I and R, like that. This is the first one. Then we also know that V equals to IR. Okay, so here P will be can be written as, instead of I V we can write I and R, then I it will be I square R. Okay, that means the power in the terms of electric current and resistance. The same way we can also define because we want to remove I from here, so like here I will be equals to V upon R. So we can define P will be, in place of I we can write V by R square, and R it will be V square by R. So like that we can, according to the numericals, that's the reason I say after that we will be start numericals. So according to the particular numerical condition, we will be use a variety of formula to calculate electric power. Now after the definition of electric power, we can define the SI unit of power. Electric power here is watt. So here the SI unit of electric power is watt. When we just go through the particular definition of electric power, so the 1 watt is a power. Okay, so 1 watt is a power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. एक particular electric circuit जिसके अंदर हमने एक particular 1 volt का potential difference generate कर दिया by the help of the cell or battery, and due to this, in this particular circuit 1 ampere current is going on. So by the definition 1 watt is a power consumed by the device. So उस particular device ने 1 watt power consume कर लिया है. So like that, by the definition we can also write the formula 1 watt equals to 1 volt into 1 ampere, and maybe 1 watt will be equals to 1 volt ampere. But now the watt is a very small unit. Okay, so in a practice purpose for the particular electric power can be also measured in the variety of units. So here commonly is called 1 kilowatt. 1 kilowatt means 1000 watt.
Now, after electric power, a small topic is there is electric energy. Very important. Why very important? You say that sir, every topic is very important, but really electric energy is very important. Why? Because according to the electric energy, we pay electricity bill in every month or every 2 months. So likewise, in your house, in a month or or in a 2 months, one kind of electric bill, this kind of electricity bill generate, and we have to pay definitely. So why? Because of this electric energy. Okay, बड़ी कॉमन सा एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कैसे करते हैं, क्यों मतलब कैसे कर, सॉरी डिफरेंट थिंग, रॉन्ग, आई एम रॉन्ग हियर, कैसे करते हैं, बिकॉज वी नो द बाय बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट आइडिया, बट इसलिए करते हैं बिकॉज राइट नाउ इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो ऑन मोबाइल लैपटॉप एनीवेयर, तो आप होल डे पर्टिकुलर होमवर्क भी करेंगे, वीडियो भी देखेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपके पास जो बैटरी लेवल कम हो जाएगा, देन अगेन वी हैव टू रिचार्ज। तो रिचार्ज करने के लिए आप प्लग इन करेंगे, दैट मीन्स उस प्लग इन करने के अंदर आपके पास जो गैजेट है उसके अंदर पर्टिकुलर वो एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर तो है डेफिनेटली, तो उसके अंदर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ठीक है। अब उन इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए आपने पर्टिकुलर स्विच को ऑन किया, प्लग इन किया, तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मांग रहे हैं। और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों मांग रहे हैं, बिकॉज हमें उन इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराना है। और फ्लो करेंगे, दैट मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड उन इलेक्ट्रॉनों को फ्लो, बिकॉज इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, डेफिनेटली हमारे पास कुछ फ्री चार्जेस होंगे, उन फ्री चार्जेस को फ्लो कराने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं। कैसे कॉमन सेंस ही बात है ना। ओके, सो लाइक दैट वे हम प्लग इन करा, दैट हमने एक एनर्जी मांगी किससे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, और उसके लिए हम पे करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द बेसिक थिंग बिहाइंड द बिल, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो लुक एट हियर प्लीज, electric energy is a product of power into time. Okay, we can already define that the electric energy H will be equals to power into time. Okay, and we know that power will be equals to VI, and then we can also write down H will be equals to VIT. Yes or no? So this particular formula we already derived. This is a particular electric energy which we use like that, and this can also be written in the I square RT, like if you apply the Ohm's law, V equals to IR here, so in place of V we can also move down H equals to IR then IT I square RT. This is a particular formula, H equals to I square RT. Okay, and you can see that here the SI unit of this electric energy is watt hour. हम पर्टिकुलर 1 आवर के अंदर अगर हम मोबाइल डिवाइस को चार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फैन चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइट, एलईडी बल्ब, वॉट एवर रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉट एवर द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस राइट नाउ वी आर यूजिंग, सो अकॉर्डिंग टू द पर आवर और पर मंथ और पर 2 मंथ वी हैव टू पे द इलेक्ट्रिक बिल। तो ये जो पर्टिकुलर यूनिट होती है हम डिफाइन करते हैं कुछ इस टाइप से, इट इज अ वॉट आवर। ओके, सो नाउ बिकॉज हियर how the watt are, because simple definition of here is the power is a watt and the time is in hour, so we can also define the definition of this particular SI unit of watt hour. So 1 watt hour is energy consumed when 1 watt of power to push the electrons, free electrons, okay, of power used for 1 hour, 1 आवर धक्का लगाने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से यूज करी। ओके, सो दी एंड इट इज डेफिनेशन, सो व्हेन वंस अगेन यू सी 1 watt hour is a energy consumed when 1 watt of power used for 1 hour. The commercial unit of electric energy is kilowatt hour, और जो किलोवाट आवर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पर्टिकुलर यूनिट के अकॉर्डिंग हम बिल पे करते हैं, और अपने अपने घर पे बाय मदर और फादर और और समथिंग आपने सुना होगा, इतना पर मंथ इतना यूनिट हो गया है, इतना बिल आएगा, लाइक दैट, हाउ मच यूनिट, इतना यूनिट हो गया इस महीने, थोड़ा कम करिए, थोड़ा एसी कम चलाइए कभी, लाइक दैट। ओके, सो यू हियर दिस वर्ड यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स। ओके, सो दिस व्हाट इज दिस यूनिट्स, इट इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स, ओके, क्लास 10th। ओके, सो राइट नाउ यूनिट इज किलोवाट आवर, so we can define like that
1 kilowatt hour will be equals to 1000 watt into, and 1 hour it will definitely 3600 seconds. So we can look like in a form of energy. So it is 3.6 10 raised to the power 6 watt second. That means this watt second is a combined called joule. So 1 kilowatt hour will be 3.6 10 raised to the power 6 joule of energy. Okay. Now after electric energy, what is the practical uses of heating effect of current? It is very useful, like in a electric toaster, like in a electric heater, geyser, okay, which is very useful in the winters, okay, and like electric iron definitely. So these are the particular practical applications of heating effect, how the filament particular glow, and then afterward you can also use this heating effect in a form of light, like a bulb filament is glow there. And then after, because why they glow, first of all we have to give the high temperature to the particular filament, and due to the heat up, what happen, it will be glow, and we can use in the form of light. That means electric energy we can also use in the form of light by the application of heating effect of electric current. So it is a very important applications. But right now we also discuss 2-3 points about it. So in addition, the heating effect which we use in a electric iron and all, here we can use different application, like the electric heating effect we can also use in the form of light. And a very important application also there, it is very important, it is used, is called is electric fuse. Somewhat what happened, due to the high voltage supply in our house, suppose somewhere the problem is there, kai baar kisi place par due to the short circuit or whatever, this will be also discussed in the next chapter, what is short circuit and all this thing. But एक particular suppose आप मानते हैं ना कि एक दिन particular आपकी जो diet है उससे ज़्यादा आपने खा लिया, okay, so what happen, it will be very interaction problem is there. So like that, एक particular electric energy जितनी requirement है उससे हम by the any causes हमारे पास ज़्यादा current आ गया, तो that means it is very harmful for all the electric appliances. जो हमारे पास हाउस के अंदर रेफ्रिजरेटर है, एसी है, अगर हमने उसको उसकी as per the requirement के according ज़्यादा current flow करा दिया, that means it will damage. Okay, so electric fuse, it is very important concept of this heating effect. उसके लिए कुछ होता नहीं है, छोटा सा पतला सा वीक वायर लगाते हैं, तो अगर बाई चांस वो एक सर्किट प्रोवाइड करता है हमारे मेन सप्लाई से, और जो हमारे हाउस में जो इलेक्ट्रिक सर्किट आ रही है, बट ड्यू टू व्हाट हैपन, अगर आपके पास हैवी इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो क्या होगा, साथ में हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा. ओके, सो नाउ व्हाट हैपन, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर वायर इज बर्न आउट, और बर्न आउट होने की रीजन से यह काम अच्छा होगा हमारे लिए. सो व्हाट हैपन, इट इज वर्क लाइक अ इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर. तो जो मेन सप्लाई आ रही है, अगर बाई चांस हैवी हाई वोल्टेज भी हो गए, तो वो पर्टिकुलर हमारे इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स है पूरे हाउस का, वो प्रिवेंट रह जाएगा, और जितने हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो प्रिवेंट होंगे. सो लुक एट हियर, वी विल डिस्कस इन दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन इन दिस टॉपिक. नाउ लुक एट हियर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक heating effect. Okay, so here is a fuse, electric fuse. So we already discussed. So now it protects circuit and appliances by stopping the flow of any high electric current. Okay, means एक particular circuit के अंदर एक according to device, अगर suppose करिए मेरा electric fan है, उसको 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंगली अगर उसमें ज़्यादा पर्टिकुलर करंट हो या वोल्टेज हाई हो गया, तो दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिक फैन को डैमेज कर देगा. ओके, सो द फ्यूज इज प्लेस इन द सीरीज, उसको सीरीज में लगाते हैं विथ, पैरेलल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, करंट हाई भी निकल जाएगा और हमारा एक पर्टिकुलर सर्किट तो बचेगा, बट दूसरा, सो दैट द रीजन मेन सर्किट के सीरीज में लगाते हैं कि अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट सीरीज की है, क्योंकि सारे पूरे हाउस के सारे पर्टिकुलर डिवाइस को बचाना है, तो पैरेलल में मत लगा दीजिएगा. ठीक है, सो द फ्यूज इज प्लेस इन सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, विथ द डिवाइस सीरीज में लगाइए. फिर आपके जो मेन जहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है उसके साथ में, जहाँ से आपका पर्टिकुलर
होम कनेक्शन स्टार्ट होता है उस पर आपका इलेक्ट्रिक मीटर और जो मेन सप्लाई होती है उसके बीच में फ्यूज़ में लगाया जाता है। बट आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, हम यूज़ करते हैं MCB। ओके, so it consists of a piece of wire made of metal wire or an alloy of a appropriate melting point, जिसका melting point appropriate हो accordingly और जल्दी मेल्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि मोटा वायर ले लिया मेल्ट ही नहीं हो रहा है। ओके, और करंट पास कर दिया हैवी। ओके, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लाइक दैट। इफ अ करंट लार्जर द स्पेसिफाइड वैल्यू, जो हमने बताया अभी, फ्लोज थ्रू द सर्किट, the temperature of the fuse increase, temperature increase होगा as per the nature of heating effect. This melt the fuse wire and the break the circuit, circuit break हो जाएगा। That means जो particular high voltage high current stop हो जाएगा बारी, और आपके जो particular house के जो appliances हैं वो बच जाएंगे। एक example अगर देखें तो देखा जाता है, suppose एक particular कोई, now we can use the electric fuse according to the value, like we can also use 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere according to the device। अगर device आपका consumption कम ले रहा है तो accordingly अगर उसका total current उसमें कम flow हो रहा है तो we can also use a small value of fuse according to the device। like एक छोटा सा example लेते हैं, here we can take the one example for like electric iron। okay, so here suppose in one electric iron use 1 kilowatt power, and the particular voltage will be here 220 voltage। so we can easily find out here the total current is going on, it will be 1000 watt upon 220 volt। so it will be like here 11, it will be 4, then 5 and 4 ampere। सो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक आयरन की रिक्वायरमेंट 4.54 एम्पियर है। सो इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं 5 एम्पियर की फ्यूज़ लगा के। सो वी कैन इजीली प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर आयरन टू यूज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ऑफ 5 एम्पियर। कम का लगा देंगे तो अदरवाइज मतलब नहीं है। सो अब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, दैट मीन्स 5 वोल्ट सफिशेंट। अगर 5 वोल्ट here 5 ampere sufficient है। suppose now आपका voltage हाई हो जाता है, due to that suppose here you got 8 ampere current, तो बड़ा temperature increase होगा, but due to high current after this value when we increase the current temperature increase होगा, temperature increase होगा, that means it is break the electric circuit and जो हमारा device है वो protect